सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइक टेक प्रोग्रामिंग। जो आज का बेसिकली हमारा टॉपिक है वो ये है कि इफ़ वी वांट टू फाइंड आउट सम लाइक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स फॉर और फाइनल सेमेस्टर्स इन और यूनिवर्सिटीज एज वेल। सो अगर कोई कॉलेज में है तो वो उसके लिए भी है, और अगर कोई यूनिवर्सिटी में है तो वो उसके लिए भी यहाँ पर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल है फॉर फाइनल ईयर्स के रिलेटेड, फाइनल टर्म्स के लिए, जब हमारी फॉर द बिफोर द ग्रेजुएशंस if you want to need any kind of final year projects with source code with documentations, तो उसके लिए हमारे पास सबसे बेस्टेस्ट वेबसाइट जो है वो इस वक्त ये है this one, like Prelude.to. This is one of the bestest website to get the or current, like I'm going to say that niche related topic for final year projects. Like if I'm not wrong, if I'm going to the to this next tab into my this browser right now, and if I'm going to tell you about the these topics, अब हमारे पास जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स में हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज यहाँ पर मौजूद हैं इस वेबसाइट के ऊपर। अगर आपको पाइथन से रिलेटेड चाहिए, बैश से रिलेटेड चाहिए, मशीन लर्निंग से रिलेटेड, जावास्क्रिप्ट, जावा, एंड्रॉयड, रिएक्ट, वेब डेवलपमेंट, क्लाउड, C++ एंड एंड्रॉयड प्रोजेक्ट्स, सो यू विल फाइंड इट फ्रॉम राइट हियर एग्जैक्टली। यहाँ से आप इनके डेवलपर्स को हायर भी कर सकते हैं, प्रोग्राम्स भी देख सकते हैं। यहाँ से आपको ये गाइड भी, ट्यूटोरियल्स भी इनके यहाँ पर अवेलेबल है फॉर मंथ स्टैक एज वेल, become a skilled full stack with hand experience in JavaScript and मंथ स्टैक, you can see this guys. Secondly, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट चाहिए विद सोर्स कोड, आई एम गोइंग टू बी लाइक इन, मैं कहता हूँ, मैं अगर पाइथन पे क्लिक करता हूँ, सो पाइथन में अगर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स अगर हमें चाहिए, हमारे पास चैटबॉट रिकमेंडेशन सिस्टम है, क्या क्या टेक्नोलॉजीज हैं उसके लिए चाहिए वो बताया हुआ है। एग्जाम क्रिकेट अलर्ट इन पाइथन हैं, डाउनलोड्स के ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है, हाउस प्रोडक्शंस हमारे पास जो सा अवेलेबल है, मल्टीप्लेयर गेम्स हमारे पास यहाँ पर है इसके अंदर। और फर्दर में अगर बात करूँ तो एक्सप्लोरेटिव एनालिसिस ऑफ जेनेटिकल डाटा एज वेल। और ये जो उनसे नोटिफाई में ये आ रहे हैं क्योंकि ये अभी तक जो से हैं प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हुए, जब ये होंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर डाउनलोड की ऑप्शन शुरू हो जाएगी यहाँ पर। एंड बट दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी इज नॉट बीइंग यूज्ड फॉर दीज प्रोजेक्ट्स लाइक डाटा एनालिसिस यूजिंग बिग डाटा टूल्स, वेब स्क्रैपिंग, फेसबुक बूट हमारे पास जो है वो बाय थ्रू सेलेनियम, यू नो एज वेल। व्हाट अबाउट, अगर हम सेलेनियम किस लिए यूज करते हैं, सेलेनियम के मल्टीपल पर्पसेस हैं फॉर टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर्स, फॉर रिकॉर्डिंग द स्क्रीन्स and etc and many other conditions we have now. Python interpreter है, Discord boot for stock है, WhatsApp APK for stickers है, and there are many other projects in different technologies like, ये तो भी मैंने आपको Python का बताया है। अगर मैं मशीन लर्निंग जावास्क्रिप्ट में जाऊं, so you can see this guys, और social app with Node.js, Express, MongoDB, template engine, EGS. You know that if someone working on month stack, तो EGS most probably और मेन में भी यूज होता है। और Heroku किस लिए यूज होता है, Heroku फॉर अपलोडिंग दी प्रोजेक्ट्स नाउ, मतलब आपको कमांड्स वगैरह यूज करके, ये तमाम मैं आपको अपनी नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में बताऊंगा अबाउट Heroku। Heroku चीज क्या है, socket.io is an API to use this thing, and you can see email alerts on WhatsApp, asynchronized फंक्शंस, सैंडबॉक्स क्या चीज़ होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा अपने न्यू जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स हैं उसके अंदर। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्टेस्ट वेबसाइट वी हैव। मतलब अगर स्लैक क्लोन यूजिंग दैट, मतलब स्लैक की ऐप जो है बेसिकली वो किसने यूज होती है। सो इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो गाइस, अगेन kindly subscribe to this channel like Tech Programming. I will give you the very informative information about the tech, and if you need any kind of things like related to web or gaming or just like interview questions, you will get here from this channel. So यहाँ से आपको सब कुछ जो है वो अवेलेबल हो जाएगा अगर आप इस वेबसाइट को यूज कर रहे हैं। मैं आपको इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। So if you really like this video guys, kindly subscribe to my channel, click the bell icon, like the video and share the video. So thank you very much.